वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सप्रेशन और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। जो लास्ट लेक्चर में अपन ने डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था उसके अंदर वी हैड रिप्रेजेंटेड द वैल्यूज ऑफ R1, R2, R3 व्हिच आर स्टार कनेक्टेड वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ R12, R23 एंड R31। और आज अपन उसका ही एग्जैक्टली रिवर्स करने वाले, दैट इज वी आर कन्वर्टिंग स्टार इनटू डेल्टा, दैट इज वी आर रिप्रेजेंटिंग द वैल्यूज ऑफ डेल्टा कनेक्टेड सर्किट, दैट इज R12, R23 एंड R31 इन टर्म्स ऑफ R1, R2 एंड R3। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा रिकॉल करते हुए वो जो फॉर्मूले अपन ने लास्ट लेक्चर में बनाए थे उसको ही अपन एक बार और देखते हैं कि वो फॉर्मूले अपन ने कैसे बनाए थे इजीली। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था R1, R2 और R3 की वैल्यूज अपन ने एक्सप्रेस की थी इन टर्म्स ऑफ R12, R23 एंड R31। और इसकी मैंने तुम लोगों को क्लास में एक ट्रिक भी दी थी कि इसको कैसे याद में रखें। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में तुम लोगों को डायरेक्टली जब फॉर्मूला अप्लाई करना है तब तुम लोगों को ये 6 फॉर्मूले तुम लोगों को याद में भी रखना है। तो याद में रखने का एकदम ट्रिक जो है इजी ट्रिक वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में शेयर किया था। आज अपन ये पार्ट 2 में उसको और एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने तुम लोगों को बोला था कि R1, R2, R3 these are the resistances in star connection, इसको एक्सप्रेस किया था इन टर्म्स ऑफ डेल्टा कनेक्शन। तो इनके जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम आते हैं, दैट इज R12 plus R23 plus R31। Here is also R12 plus R23 plus R31 and here is also R12 plus R23 plus R31 and numerator में here it is 1। तो ये तीनों में 1 कौन से रेजिस्टेंस में आ रहा है? R12 में और R31 में। Here it is R2, तो 2 कहीं में आ रहा है? एक R12 and second is R23 and here it is similarly R23 and R31। लास्ट लेक्चर को ही अपन ये लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपने आई थिंक 4 एक्सप्रेशन हुए थे, तो इसको ही अभी इक्वेशन नंबर देते हैं, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 and equation number 7. Now what to do for getting the values of R12, R23 and R31 in terms of R1, R2, R3? That is, we are converting the star connected network into what? The delta connected. So I am multiplying equation number 5 by 6. So what we are getting? We are getting, so equation number 5 into equation number 6. So LHS must be then R1 into R2 is equal. Value of R1 is R12 into R31 upon R12 plus R23 plus R31 multiplied by R2 is R23 into R12 upon R12 plus R23 plus R31. If I multiply this both the bracket as denominator is common, so this should be R12 plus R23 plus R31 whole bracket square and numerator must be R12 into R12, so it must be R12 square into R23 into R31. So this is what, let it be equation number 8. So we get the value of R1 into R2. In a similar pattern, what we have to do now? We have to multiply R2 into R3 and in a similar pattern we have to multiply R1 into R3 also. So calculating the further 2 more equations. So similarly now R2 into R3 अगर अपन करते हैं तो I will get R12 plus R23 plus R31 whole bracket square and in the numerator it must be now R23 square into R12 into R31, equation number 9. In the similar pattern, suppose we are multiplying R1 into R3, then we will get denominator is common R12 plus R23 plus R31 whole bracket square and in the numerator it must be now R31 square into R12
into R23, equation number 10. Now what I am doing, I am adding all the three equations, that is equation number 8, 9 and 10. So adding equation number 8 plus 9 plus 10, it implies. So LHS will be R1 into R2 plus R2 into R3 plus R3 into R1 is equal. Here it is R1 into R2 is R12 square into R23 into R31 upon R12 plus R23 plus R31 whole bracket square plus R2 into R3 is R23 square into R12 into R31 upon R12 plus R23 plus R31 whole bracket square, and lastly plus R3 into R1 is R12 plus R23 plus R31 whole bracket square, in the numerator R31 square into R12 into R23. While adding all the three brackets, so we found here the denominator is common, that is R12 plus R23 plus R31 whole bracket square, and in the numerator R12 square into R23 into R31 plus R23 square into R12 into R31 and plus R31 square into R12 into R23, right? So what we are getting? So left hand side is R1 into R2 plus R2 into R3 and plus R3 into R1 is equal. So denominator is common term, that is denominator is R12 plus R23 plus R31 whole bracket square, and in the numerator, if you found from all the three terms, we are getting common term R12 into R23 into R31. So in bracket, in the first term R12 plus R23 plus R31, right? So this bracket it cancel with this, and we are getting now R12 into R23 into R31 upon R12 plus R23 plus R31, and therefore R1 into R2 plus R2 into R3 plus R3 into R1 is equal. If you are observing this, and if you are looking back to equation number 5, 6 and 7, then you will observe what? Suppose we are considering R12 into R31 upon this. So this is going to be R1 into remaining is R23. आप लोग ये भी ले सकते हो, अगर तुम लोग ये दो लेते हो R12 into R23 अपॉन R12 plus R23 plus R31, तो ये अगर मैं इतना कंसिडर करता हूँ तो ये कौन बनेगा? R2 बनेगा. अगर मैं R23 into R31 अपॉन दिस इतना पार्ट लेता हूँ तो ये कौन है? ये है R3. So we are here collecting R12 into R31 upon this. So this should be R1 into remaining is R2. And therefore we are getting the value of R23 as R23 is nothing but R1 into R2 plus R2 into R3 plus R3 into R1 upon R1. So this is what we get the value of R23 in terms of R1, R2, R3.
अगर इसको ही बराबर देखते हो तो सिमिलरली करके मैं नेक्स्ट लिख सकता हूं, दैट इज r12. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ r12 एंड सिमिलरली लास्टली व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ r31 in both the terms in the same manner. If you are correcting these two terms, then we will get what here? We will get here the value of r2. So in this manner we will get the value of r3. So similarly we can write numerator तो same ही आएगा दोनों भी इसमें, that is r1 into r2 plus r2 into r3 and plus r3 into r1. Here it is also r1 into r2 plus r2 into r3 plus r3 into r1 and in the numerator now. Now see carefully, I am giving you the trick how to remember this. जैसे कि r23 तो कौन नहीं है 1, इसलिए r1 लिखा. In the same manner r12 कौन नहीं है 3, so that's why we are writing here r3. जब भी तुम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे और स्टार डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, तो तब तुम लोगों को ये ऐसे ही फॉर्मूले याद रखना है, सो दैट कि कभी फॉर्मूले में गलती ना हो, जल्दी से जल्दी तुम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाक से लिख सकते हो फॉर्मूले. जैसे कि r31 कौन नहीं है 2, इसलिए वी कैन राइट हियर r2. तो ये अपन ने आज कंक्लूड कर लिया. लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर जो डेल्टा सर्किट था उसको स्टार में कन्वर्ट किया था. अल्टीमेटली मींस वी हैड फाइंडेड आउट द वैल्यूज ऑफ r1 r2 r3 इन टर्म्स ऑफ r12 r23 एंड r31. और आज के लेक्चर में अपन ने पढ़ा स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर अगर इनपुट तुम्हारा स्टार कनेक्शन है और आउटपुट अगर तुम्हारा डेल्टा कनेक्शन है, तो वी हैव फाइंडेड आउट द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस इन डेल्टा कनेक्शन, दैट इज r12 r23 and r31 in terms of r1 r2 and r3. That is what the value in star connection network. So guys, I concluded the delta to star and star to delta transformation expression. ये जरूर तुम लोगों को होप्स हो कि मेरा ये जो लेक्चर है ये अच्छा लगा होगा. अगर तुम लोगों को मेरे जो भी लेक्चर्स हम दे रहे हैं यहाँ पर विजिट मैन एकेडमी के अंदर, तो ये पसंद आ रहे होंगे, तो जरूर हमको मोटिवेट करने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हो सके तो शेयर करो. Thank you so much.